Hello everyone and welcome to Mathematics SCHOLEIO. This is course snippet series where you will find a small video clip from our final revision program for JEE Advance that we have launched on our app. Name of the app is Mathematics SCHOLEIO. After watching the video, if you like it, then do not forget to hit the like button because that gives us the motivation to bring or publish more quality content on the channel. So let's begin. Let us read the question. Let's see what they are trying to say. So question says that for the curve, see we have been provided with this curve, right? Which is in the implicit form, lying in the first quadrant. So lying in the first quadrant, indirectly they are saying that you just have to take x and y positive. Find the constant alpha such that this limit exists and is non-zero. So limit exist करना चाहिए and should be non-zero. चलिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें चाहिए वो है d2y by dx square, क्योंकि उसके अलावा x बार अल्फा में अल्फा इज अननोन दैट वी नीड टू कैलकुलेट, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज d2y by dx square आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर. क्या करना होता है जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिया जाता है, किस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव चाहिए? अब जैसे इस क्वेश्चन में तो मुझे d2y by dx square इन जनरल चाहिए. सपोज दे सेज दैट यू हैव टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट सम पॉइंट 0. अगर x इक्वल्स टू 0 पर आपको d2y by dx square चाहिए तो आप अपने स्टेप्स में क्या करते हो? सबसे पहले आप y0 कैलकुलेट करके रखते हो, फिर आप y dash 0 कैलकुलेट करते हो, एंड देन यू गो टू y double dash ऑफ 0. यानी इन द प्रोसेस यू विल रिक्वायर दीज क्वांटिटीज. तो हम शुरुआत से ही जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर करके रखते चले जाते हैं. ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं पूछा गया है. दैट इज द रीजन आई विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इट एंड विल कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग टिल आई गेट d2y by dx square. ठीक है, सो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? प्लस कॉस एंड प्लस. अब साइन y का डेरिवेटिव आई नीड टू राइट, सो यू विल बी राइटिंग इट एज cos y dy by dx. This is equals to 0. So this is the first, we can say first order derivative I got. In case we require dy by dx, I'll take the value from the second equation. ठीक है, अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा because I need d2y by dx square. तो cos का डेरिवेटिव लिखा. नेक्स्ट cos y का डेरिवेटिव I'm writing. So minus sin y dy by dx का whole square. And then we have plus cos y d2y by dx square. This is equals to 0. This is the third equation that we have. What you need in the question is, you need in the question d2y by dx square. I need this quantity, right? अब क्योंकि ये वाला क्वांटिटी चाहिए तो थर्ड इक्वेशन से हम d2y by dx square निकाल देंगे, और d2y by dx square क्योंकि dy by dx की टर्म्स में आएगा, तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन हम dy by dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. ठीक है, so what we are going to do in the next step, now I'm going to write that d2y by dx square is equals to sin x plus sin y multiplied by dy by dx का whole square and divided by cos y. ठीक है, what is dy by dx? Let's go and check out. So dy by dx, as you can see from the second equation, it is minus cos x upon cos y. It is minus cos x upon cos y means what you can write? Sin x plus sin y multiplied by minus cos x upon cos y का whole square. So negative sign will be absorbed. Minus cos x upon cos y का whole square. And the denominator is going to become cos y. So this is what we have in the question, right? d2y by dx square we have calculated. Let's write it properly. After taking the LCM, the equation will look like sin x into cos square y plus sin y into cos square x. Coming to denominator, it is going to be cos cube y. ठीक है, so denominator what we are getting is cos cube y. This is d2y by dx square, and I need, or what we need in the question is, I need the limit x bar alpha d2y by dx square to be non-zero finite, right? This is the question. So alpha we need to find out so that the limit exists and is a non-zero finite limit. अभी उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो मैं जरा एक बार क्वेश्चन लिखती हूँ. क्वेश्चन हमारे पास ये है कि where x is tending towards 0, we need x bar alpha
d2y by dx square. अभी d2y by dx square हमने क्या लिया? It is sin x into cos square y plus sin y multiplied by cos square x. Coming to denominator, what do we have is cos cube y. Let's proceed. Limit x tends to 0. X bar alpha is fine, but a problem ये है कि we have two variables in the question, right? हमारे पास x भी है और y भी है in the equation. Yes, x and y, they are related with some relation which is given in the question, but still right now I have two variables in the same equation. Obviously, when you get two variables in the same equation, what is your next step? The next step says that go and eliminate one variable. Or you write the whole expression in terms of minimum number of variables. Like here, it is possible to remove y and write it purely in terms of x. So I will be going for that approach. यानी यहाँ क्या करने जा रही हूँ, अब आप ध्यान से देखोगे कि इस पूरी इक्वेशन में just for the sake of convenience, I'm going to take sin x as t. But जैसे ही आप sin x को t लेते हो, because of the question says sin x plus sin y is 1 ना, तो मैं कह सकती हूँ कि sin y का वैल्यू जो मुझे मिलेगा that will be 1 minus t, right? अब sin x पता चल गया तो cos x भी निकाल कर रखो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ी तो हम cos x को भी in terms of t लिखेंगे. cos y का वैल्यू निकाल कर रखिए. So हम ये देख सकते हैं कि जो cos y हमें मिल रहा है वो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाता है. देखो 1 कैंसिल होगा, 2t आएगा, तो 2 लिखा मैंने, and then we will be getting minus t square. So I will be writing it as root over t into 2 minus t. तो मेरे पास sin y, cos y, sin x, cos x, everything is in terms of t now. Further, when x is tending towards 0, you can see that t भी 0 की तरफ जाएगा. यानी जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, अगर मैं उसे t की टर्म्स में लिख देती हूँ just for convenience, तो वो बनता है limit x tends to 0, x power alpha, अभी ऐसे ही लिखा, x को आप रिप्लेस करके sin inverse t लिख सकते हो, बट अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखूंगी. meanwhile x power alpha, sin x को हमने लिखा है t, cos square y. what is cos square y? so you can see cos square y का मतलब होगा t into 2 minus t. after that we have sin y, so sin y को लिखना है 1 minus t multiplied by cos square x. cos square x का मतलब होगा 1 minus t square. Coming to denominator, cos cube y. What is cos cube y? It is nothing but 2 minus t multiplied by t whole power 3 by 2. So this is how we can write it. Correct? Let's see what we are getting. Now if I keep t tends to 0, when x is tending towards 0, t is tending towards 0. So when t tends to 0, this vector has no issues. I can write it as some non-zero finite value, which is 2 root 2. Coming to the numerator, let us see each and every value. So this term will turn out to be 0, but what about this term? It will reduce to 1. So I'm going to just remove all these terms from here and will replace it with 1 divided by 2 power 3 by 2, and leftover question I will proceed with the question. So this value, as I told you, this will turn out to be 1 by 2 root 2. The leftover question is limit x tends to 0, t tends to 0, x power alpha upon t power 3 by 2. But what is t? We have taken t as sin x. So t sin x है ना, आप sin x लिख दो यहाँ पर. It will become sin x power 3 by 2. Now the question has become very simple. What you need to do is, you just have to compare it with the standard limit and get your answer. तो हमारे पास standard limit क्या आती है? When x is tending towards 0, sin x upon x is the standard limit that we usually get to get a non-zero finite answer. So accordingly, the value of alpha should be how much? The value of alpha should be 3 by 2. So when you take alpha as 3 by 2, you will be getting the answer to the limit as 1 by 2 root 2, which is a non-zero finite answer, right? So अब आप पूरे क्वेश्चन में देखो हमने क्या चीज कवर की. हमने एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कवर किया. यहाँ पर भी आप नोटिस करो कि जब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर जा रही थी ना, तो मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए dy by dx की जरूरत पड़ रही है. आई यूज्ड dy by dx फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन इन द थर्ड वन. ओके, सो ये चीज ध्यान रखेंगे. डेरिवेटिव जब भी आप इम्प्लिसिट फंक्शन का ले रहे होते हो, इनकेस आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो इन बिटवीन प्रोसेस में y dy by dx ये सारी वैल्यूज को हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है. ठीक है. So reminding you once again, please like, share and subscribe and propagate the channel. Thanks for watching. Bye-bye.